right, welcome everybody to another episode of Basement Batak with your host Shahab, and we are not live from O Town, Ottawa City. And today we will be talking about the infamous cipher that rocked Pakistan and pretty much still facing the aftershocks of that cipher. Uh, हम लोग आज बात करेंगे वो जो साइफर या हम नॉर्थ अमेरिका में जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक केबल जो असद मजीद जो हमारे उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर थे टू द यूएस उन्होंने भेजा था 7 मार्च को 2022 जिसकी वजह से एक बहुत आईनी बहरान आ गया था हमारे मुल्क में जो जिसके आफ्टर शॉक्स हम अभी भी सह रहे हैं तो ये है हमारा आज का टॉपिक सो लेट्स गेट डाउन टू इट So before I start today's topic, let me just go out and shout out to everyone who subscribed to my channel. I have now, I think, over 200 subscribers. So thank you everybody for listening to me, showing some love. And I'm asking you again to subscribe to my channel if you haven't already. Help me get there and buy some better equipment so that I can have better lighting. As you can see, it's very dark here. और प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं उसको सब्सक्राइब करें एंड इफ़ यू कैन also follow me on X formerly known as Twitter मेरा हैंडल शायद I will try कि नीचे कहीं पे दिखे ताकि आप मेरा हैंडल देख लें ट्विटर पे and follow me on Twitter or X as they call it now so yeah thank you very much let's get to our topic which is deciphering the cipher all right so ये अभी congressional hearing हुई थी US में जिसमें हमारे डोनाल्ड लू साहब जिस तरह हमारे मोदी साहब कहते हैं डोलैंड लू कंग्रेशनल हियरिंग हुई थी जहाँ पे वो आए मज़े की बात ये थी कि ये मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन this hearing was pushed by the PTI so there was a lot of lobbying going on to have a congressional hearing बहुत सारे कांग्रेसमैन को just maybe I might talk about some of those congressmen and their checkered past or even present. Um, yeah, so they lobbied these individuals, हमारे congressmen, to have a hearing. डोनाल्ड लू को बुलाया गया था वहाँ पे और सारे पहुँचे हुए थे वहाँ पे अगर आप देखो पूरा टोला पहुँचा हुआ था वहाँ पे इंक्लूडिंग कोट पिंक की जो हमारी माई है बड़ी फेमस बेचारी अच्छी औरत है बहुत अच्छी औरत है वो हर जहाँ पे भी उसको लगता है कि बुराई हो रही है तो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएस तो पहुंच जाती है वहाँ पे वेरी वोकल पैलेस्टाइन के लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है सो शी इज़ अ वेरी गुड लेडी उनके साथ एक टिपिकल यूथ अंकल थे लेकिन बहरहाल वहाँ पे पहुँचे हुए थे सारे आई थिंक दे केम विद एक्सपेक्टेशंस के यार हम कोई आज ऐसी बात सुनेंगे या ऐसी बात करवा देंगे जिसकी वजह से हमको एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक या लेट्स से पीआर विक्ट्री मिलेगी जिसके बलबूते पे हम जो है प्रेशर को ज़रा ज़्यादा बढ़ाएंगे ऑन not just the Pakistani establishment but on the political structure in Pakistan. I mean इसके far-reaching consequences क्या हो सकते हैं I don't know I'll guess but one could be to pressure like one of the congressmen I believe it was Brad Sherman if I'm not wrong asking कि भाई आप जाएं हमारे पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं यूएस के उनको भेजें जेल में और इमरान खान से मिले और मेरे ख्याल से इसका if you read between the lines what he was trying to say was try to get him released and oddly enough जब वो इस रिलीज की बात कर रहे थे तो उन्होंने नथी कर दिया हमारे खान साहब को with Dr. Afridi of all people so who was a big let's say a CIA asset so naming a CIA asset with Imran Khan itself red flag and a half for me if you ask me but be that as it may अगर आपने देखा हो ये congressional hearings बड़ी बहुत होती हैं पाकिस्तान अमेरिका में I haven't seen much of that nature here in Canada लेकिन यूएस में काफ़ी होता है और सोचे अगर ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह होता तो a lot of the evil would be nipped in the bud right before a shitstorm would be kicked off आप सोचिए अगर असद मजीद को उन्होंने बुलाया होता उस ज़माने में और वो सेनेट के सामने या पार्लियामेंट के सामने वो बैठते और उनको ग्रिल किया जाता और ये लाइव जा रहा होता जिसमें सारे पाकिस्तानी देखते हैं कि भाई
जाहिर सी बात है पीटीआई के मिनिस्टर्स उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं और ऑपोजिशन के मेंबर्स भी सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तो यू कैन आर्ग्यू कि यार अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारी इस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, तो अंडर प्रेशर शायद असद मजीद वो जवाब नहीं देते हैं जो, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनको फायर कर सकती है। बट बहरहाल आई थिंक इट्स समथिंग टू कंसिडर कि मे बी वी कैन डू समथिंग सिमिलर, जिस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट आजकल जो है अपने प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम करता है यूट्यूब में। सो मे बी वी दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव, बिकॉज आई थिंक जो फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज हमारी चलती है पाकिस्तान में, a lot of that could be countered by having these kinds of let's say preemptive action, जिसमें हम एक हियरिंग करें, हमारे एम्बेसडर को बुलाएं, चाहे वो, I don't know, I don't understand this in camera session, I don't even know what the heck that means, लेकिन it's not really camera for all of us, we're not able to see it. So I feel कि अगर ये चीज़, ये प्रैक्टिस अगर पाकिस्तान में भी आ जाए तो काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ ये जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है ये at least, let's say 50% कम हो जाएगी at least. All right, so right off the bat, I mean, I can talk a lot about कि Donald Trump ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, लेकिन let's talk about the biggest headline and concentrate on that. Uh, and before I do that, let me just tell you why I'm doing this. So the reason why I'm doing is because बहुत सारी स्टोरीज आई, अगर आप देखें ना तो ये साइफर की दो वर्जन्स हैं। एक हमारे खान साहब का वर्जन है जो उन्होंने नरेट किया कि यार ये साइफर आया था, तो और मेरे ख्याल से भी निकला, उन्होंने कहा कि यही हुआ, इस तरह हुआ। क्या ये जो उन्होंने उनका जो वर्जन था साइफर का, क्या ये सही था या एक दूसरा वर्जन है, which which I will call the reality, which is not tainted with the way he was looking with his blinkered vision. Um, तो ये मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि I'll try to break down for you the timeline of how Imran Khan sees this cipher versus how it actually unfolded in history. Okay, and क्या हुआ? What were the events that led up to the cipher? And is there any, let's say, is there any water? Well, that shouldn't be the right word, but let's say, is there any kind of consistency in what he's saying? Is there any coherence in what Imran Khan's narrative is? I feel there is not, and the reason why I'm going to show you that timeline of events is because I feel कि उससे काफ़ी चीज़ें clear हो जाएंगी. I feel कि होता ये है कि पाकिस्तान में स्पेशली पीटीआई की साइड से they bombard you with fake news. So होता, मतलब खान साहब ने अपना साइफर की स्टोरी निकाली, फिर उसके बाद फलाना चीज़ हो गई, फिर एक और कोई फेक न्यूज़ आ गई, फिर कुछ और हो गया, फिर उन्होंने थोड़े हंगामे कर दिए, फिर पथराव हो गया और फिर जलसा हो गया। तो बहुत कुछ होता रहता है जिसकी वजह से you get sandwiched. A lot of the original events get sandwiched and you lose your way. You kind of forget the train of thought. Okay, how that first piece, uh, you know, let's say, fixes with the second piece. Um, and obviously because between that one and second piece there's a lot of junk in between, fake news and big highlights, some other thing happening, so you lose track of what's happening. So what I want to do in this episode is I want to take a bird's eye view and show you the timeline of what happened, uh, and once you see that, maybe we'll get a better idea of what that cipher narrative actually really meant. uh, was it serious or not? And I just wanted to stress कि हमारे खान साहब का एक बहुत ही specific claim था about the cipher. Forget about the interference, जिसमें हर बंदे की, everyone that I've spoken to or you can see kind of agrees कि मुदाखलत या interference हुई है, ठीक है? ये कोई नहीं कह रहा कि साइफर आया ही नहीं, वो एक अलग बहस है कि पहले उसको उन्होंने ख़त कहा, फिर उसको ख़त से उनको साइफर बना दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, जब उन्होंने शुरू में कहा था खान साहब ने कि ये एक ख़त आया है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, कोई ख़त नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ख़त नहीं था, वो साइफर था। सो इट्स नॉट लाइक एक प्रेम पत्र लिख कर उन्होंने भेज दिया। सो because of the wording he chose, a lot of people rubbished it because they knew कि यार ऐसा ख़त कोई लिखता नहीं है. So be that as it may, that cipher comes and he makes a story out of it. Now, is that story correct? Let's find out through our timeline to see if that really makes sense. Okay, so let's come back to what I was saying about the big highlight of this
congressional hearing. तो ये highlight ये थी कि Donald Lu साहब ने categorically and unambiguously he denied or rejected Imran Khan's version. Uh, Big in the sense because अगर आप देख रहे थे उस hearing को, and I would encourage you to just listen to the gasps when he starts talking about and rejecting it. So a lot of people who were there, I think वो इस impression में थे कि ये कुछ ना कुछ तो confirm करेगा जिसकी वजह से हमको एक victory मिलेगी. तो the fact that he came out outright rejecting it uh, made a lot of people uneasy. So if you saw the reaction, उन्होंने फौरन हुल्लड़बाजी शुरू नहीं की, उन्होंने हूटिंग नहीं स्टार्ट की फौरन. उन्हें थोड़ा सुना और they tried to kind of process के हुआ क्या है, ये बंदा तो उसको flatly deny कर रहा है. And then suddenly they came back to their senses of फिर और झूठा liar शुरू हो गए सारे के सारे. Eventually some of them got ejected out of the hearing room. um, लेकिन yeah, so he unambiguously rejected it. Now, unfortunately, because of all this, and I think this is one reason why ये जो PTI के लोग जो lobby कर रहे थे उन्होंने इसको सही तरह tackle नहीं किया, because what they should have briefed their जिनको ये lobby कर रहे थे congressmen को कि भाई इसको cross question करो on the exact contents of that cipher, and no one did that. So which goes to show that they came with the preconceived notion कि यार ये हम जाएंगे और डोनाल्ड ने तो कहना है कि हाँ यार मैंने ये चुस मारी थी और बस गेम सेट मैच हम जीत गए तुम हार गए. लेकिन इस तरह it didn't unfold this way and no one was ready, no one had done their homework correctly, frankly, because once he denied that इतने categorically, तो someone should have cross questioned him कि यार आप ये जो deny कर रहे हैं आप exactly क्या deny कर रहे हैं. Are you denying कि you said these words? Like, did you say the words के जो पाकिस्तान ने आपको demarch किया था, for example? What did they demarch you on exactly? If you didn't say anything wrong, so you must have said something जिसकी वजह से आपको demarch हुआ है. या हमारे जो पाकिस्तान में जो एम्बेसडर थे उनको यूएस के एम्बेसडर थे उनको डिमार्च किया गया था, तो वो एग्जैक्टली क्या कहा था आपने ऐसा जिसकी वजह से आपको कहा था. एंड देन दे कुड हैव कोटेड इट कि भाई हमने सुना है कि आपने कहा था कि यार अगर आपने खान को नहीं निकाला तो हम लोग कंसिडर करेंगे एंड देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ continuing this relationship, or adversely that this will affect, because ये खान साहब को तो यही है ना कि यार धमकी दी गई थी कि यार इनको निकालो, नहीं निकालोगे तो हम अपने एड बंद कर देंगे या जो भी वो सब वो कह रहे थे. बहरहाल, so that rejection came as a shock to these guys, and they had no plan B of how to tackle this. So that's pretty much it. Now, अगर आप खान साहब का version of events देखें, I mean, what he said is what. First of all, let's just hear what he has to say. Okay, so उन्होंने किस तरह version of events दिए. Take a listen. साइफर में दो मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं. सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है. और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का. आपको पता है रूस और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया. Okay, so you heard what he had to say. Now think about this. His chain of events are going this way. कि रशिया का वॉर होता है, and Russia and Ukraine go into a war which happened Feb 20th, 2022, and I'll show you in an illustration this timeline. And इसी दौरान वो रशिया गए हुए थे. इनफैक्ट वो जब रशिया गए तो उसके अगले दिन ही वॉर शुरू हो गई. So I think he reached on the 18th or the 19th of Feb. He reached in Moscow, and then, or Moscow as they say it in the US, and then next day the war starts. And then what happens if you read the cipher? अगर आप intercept पे जाएं, because जितने भी आप PTI के supporters से बात करेंगे उनका version जिसको मैं कह रहा हूँ इमरान खान version is basically the intercept. Okay, because the intercept को भी इन्होंने document leak किया था.
साइफर लीक किया था। तो अगर आप इंटरसेप्ट की स्टोरी पढ़े, टाइमलाइन पढ़े, तो इस तरह लगता है कि हुआ ये कि जैसी रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ी, क्योंकि हमारे खान साहब वहाँ थे एट द टाइम, एंड ऑब्वियसली बातचीत ऑलरेडी चल रही थी कि एक जंग हो सकती है, और इसलिए लॉट ऑफ पीपल बैक देन, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम कह रहे थे कि यार अभी ना जाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. But Berhal, the decision was taken, and I believe that Asad Majid also said that this decision was not Imran Khan's to make alone, but the entire establishment, which includes our foreign office, our military, our parliament, they all agreed that we need to go to Russia and have this, and this trip was kind of supposed to happen, or was kind of confirmed a long time ago. So ये होना ही होना था. As it happens के war broke out when खान साहब ने अपने मुबारक कदम मॉस्को में रखे. um, तो इंटरसेप्ट की यही स्टोरी लाइन ऑफ events है. The events are, he reaches there, war starts, and then uh, Americans are unhappy. तो अगर आप देखना Feb 20th को ये होता है, the war starts, and then Donald Lu meets our ambassador in the US, Asad Majid Saab, around the 7th of March. So 2 weeks elapse, and in that 2 weeks, he obviously, I remember March 2nd ko, yeah, 3rd ko, he was again congressional hearing हुई थी 2022 March 3rd को मेरे ख्याल से, जहाँ पे डोनाल्ड लू को बुलाया गया था from by the US, I think it was the Senate back then, Senate की hearing थी, उनको बुलाया गया था और पूछा गया था उनसे कि भाई ये हो क्या रहा है, because obviously the world was not happy with the US getting involved in Russia and Ukraine conflict. So a lot of people were backing out from the US support. Historically, US allies, then they were backing out. So they were not happy with this. I mean, even India kind of like took a neutral stance. So Donald Luke grilled किया गया था by the Senate committee कि ये हो क्या रहा है? What are you doing? You are our person there in South Asia. What have you done to lobby our partners to take our side, or at least not be neutral this way? सो श्रीलंका का नाम आया था, इंडिया का नाम आया था, नेपाल का नाम आया था, पाकिस्तान का भी नाम आया था, और पाकिस्तान का स्पेसिफिकली नाम इसलिए आया था क्योंकि इमरान खान तो थे वहाँ भी थे जब ये गन स्टार्ट हुई थी. सो फॉलोइंग दैट मार्च 3rd, ये मार्च 3rd को होता है. फिर March 7th को ये भाई साहब मिलते हैं हमारे एम्बेसडर से, असद मजीद साहब से, और वहाँ पे ये डिनर करते हुए दे हैव सम डिस्कशन. नाउ whatever the discussion is, um, that we'll maybe get to at another point in time. लेकिन you can see the chain of events कि यहाँ पे अब हो ये रहा है कि because of this war, the US is now unhappy with Pakistan. And when I go to the timeline, the reality timeline, आप देखेंगे कि यार ये शुरू में in 2021, Imran Khan had never said anything about the US trying to push a regime change. Okay, ये बात थी नहीं 2021 में. Uh, and you will see in my timeline कि हम VONC जो है, the vote of no confidence का जो push था वो already शुरू हो चुका था, as early as well, in Imran Khan's own words, and I'll show you a clip of that. July 2021 को उनको intelligence मिलना शुरू हो गई थी कि यार मेरे खिलाफ एक vote of no confidence आने वाला है. और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का. तो मैं नहीं चाहता. Okay, we'll come to that timeline a little later. But what I'm trying to stress over here is that timeline. ठीक है, तो जंग होती है, America not happy with us anymore. March 3rd को 2022 को वो बुलाते हैं डोनाल्ड लू को, बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है वहाँ पे, हम तुझे किस बात के पैसे दे रहे हैं. तो डोनाल्ड लू साहब फिर जाते हैं, असद मजीद के साथ डिनर करते हैं और वहाँ पे अपेरेंटली धमकी मारते हैं. और अपेरेंटली भी नहीं किया, एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ मैसेज जाता है, बिकॉज हमारी पूरी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, एंड अगेन दे डिमार्च्ड the ambassador to Pakistan, the US ambassador to Pakistan, for a reason, because they felt that there was threatening language in that communique. So ये है टाइमलाइन, ठीक है, उनके लिहाज से. और फिर इसके फिर 8 मार्च को या 9 मार्च को, आई थिंक 8 मार्च को जो है, एंड we'll see the timeline coming up soon,
vote of vote of no confidence gets tabled in the parliament. So as you can see, I mean, apparently बड़ी जल्दी जल्दी काम हुआ कि उन्होंने वहां से धमकी मार दिया, उस एक दिन में सबको नोट भी मिल गया, और अगले दिन जो है exactly one, well, 24 hours after, not even 24 hours, literally 12 or 16 hours after that, पाकिस्तान जो है वो very nimble on the foot goes and जाके फिर हमारे मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो टेबल कर देते हैं vote of not confidence against Imran Khan. ये है उनकी timeline. Now, is this timeline correct? I wanted to show you something on in terms of an illustration. Let's see that. All right, so the VONC, vote of no confidence timeline, and I'm going to go pretty far back out. So I'm going to start from 2019 because ये पूरा build up था. ये vote of no confidence didn't just come out of nowhere. So if you remember what happened back in 2019, the first event that happened was August 1st, 2019. एक chairman Senate election हुआ था, जिसमें opposition के पास numbers थे, ठीक है? If you remember, उन्होंने एक show of hands किया था जिसमें they had the clear majority to elect their own chairman Senate. I believe it was Yusuf Raza Gilani, if I'm not mistaken. जो भी थे, नहीं, Hasil Bazinjo थे, sorry. Hasil Bazinjo was the candidate for PDM, and he should have won that, but I guess किसी का फैज़ था, and Sanjrani Saab survived that. Now this was kind of like a test in the water, okay? Like PDM was trying to gauge कि यार क्या हमारी establishment neutral है कि नहीं? अगर हम despite the if we have the numbers by some margin, और हम एक vote of no confidence नहीं, लेकिन at least chairman senate जो एक मोहरा है, I mean, अगर आप chess board को देखें, he is like a pawn, okay, a smaller player than the king himself. Okay, so before we go for the king, let's try to knock out this guy and see if we can do this. अगर हम ये play कर सकते हैं, यानी कि we have some standing to take it to the next level. But होता ये है कि Hasil Bazinjo ends up losing this chairman Senate. Sanjrani remains chairman Senate, and then we move on to the next big event, and that is October 28, 2019. अच्छा, अभी आप बस इसमें इस बात को जरा just keep it in mind that PDM अभी फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है? और जब PDM फॉर्म होती है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दो नज़रिए एक साथ साथ चल रहे होते हैं. एक हमारे मौलाना साहब का है और एक बिलावल भुट्टो का नज़रिया है. Maulana Saab was like, and he has said this in his interview with some anchors very recently, okay, he wanted to use street power to knock him off. Basically, if I were to say it in another way, extra constitutional way to get rid of Imran Khan. And if you remember, जब इन्होंने अपना आज़ादी मार्च वाला धरना किया था 18 दिनों का, मैंने भी उस ज़माने में ट्वीट किया था, and I was not up for it because obviously I don't believe in these extra constitutional steps, and I believe most dharnas fail anyway. बहरहाल उन्होंने ये धरना किया और कुछ मिला नहीं उनको. He ends up losing, although उनको उस ज़माने में मेरे ख्याल से हमारे परवेज़ इलाही साहब थे और someone else चौधरी शहजाद में भी, उन्होंने जाके उनको लारी लप्पे मार के कि हम ये कर देंगे, वो आप फिक्र नहीं करें, हमने फलाना से बात कर ली है और 1 साल के बाद हम उसको फारिग कर देंगे, इससे रेजिग्नेशन दिलवा देंगे, या जो भी उन्होंने उनके साथ वादे वहीद किए, उनको उन्होंने छुट्टी करवा दी. हमारे मौलाना साहब, tails between the legs, goes back home. Next big event, PDM is formed. And when PDM is formed, they come up with, in fact, Bilal Bhutto is the first person who actually articulates and, kind of hints the way that they're going to remove Imran Khan. And they say, yaar, ye hum karenge through constitutional means. And there's only one way of, using the constitution. But the constitution gives you only one method to remove the prime minister, and that's a vote of no confidence, Article 95. So PDM gets formed, and I just wanted you to understand कि कोई भी organization जो form होती है उसका कोई raison d'être होता है, okay? Well, I think in French they call it raison d'être, and English they get the raison d'être.
इसका मतलब होता है कि द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस के ये भाई ये आप बन क्यों रहे हैं, आप व्हाई डिड यू, आप ये पीडीएम क्यों बनी। और इस पीडीएम के बनने की एक ही वजह थी, यू कैन गो ऑन विकीपीडिया एंड चेक एंड यू विल सी दैट उनका एक ही एजेंडा था कि खान साहब को निकालना है, उनको घर भेजना है वापस। kind of like the ARD back in 2000 whatever, 2007 2006 when ARD took shape, तो उनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि यार मुशर्रफ को फारिग करो। और दैट्स उसकी वजह से हम सारे साथ बैठ रहे हैं। उस ज़माने में इमरान खान साहब भी ARD का हिस्सा हुआ करते थे, तो मौलाना साहब के वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे बैक बैक इन द डेज। तो पीडीएम का ये था कि भाई हम सारे मिल रहे हैं खान साहब की छुट्टी करवाने, ठीक है। और तरीका वारदात क्या था? आर्टिकल 95, वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस। ओके गुड। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप इन द टाइमलाइन? Again, after a lot of and this happens kind of like after a few months, uh, PDM starts testing the water again. जैसे आपको August 1st का 2019 का अगर आपको याद हो, they tried to test the water, they failed. March 3rd 2021 को they checked the waters again, and this time, even though they didn't have the numbers that they had back in August 1st 2019, out of nowhere a sucker punch आया from People's Party and Yusuf Raza Gilani won. And it kind of sent Khan Saab in a panic. यार ये क्या हुआ? क्या ये मेरे फौजी भाई जो हैं जो मुझे हमेशा बचाते थे, क्या ये मेरे साथ हैंड करना शुरू कर दिया उन्होंने कि नहीं? And then out of panic, just a few days later, he calls for a vote of confidence because now I think someone somewhere, most probably Faiz Hamid, told him कि नहीं हम अभी आपके साथ हैं and don't worry, we can prove it to you. And this March 6, 2021 vote of confidence was done uh, to prove to Imran Khan कि भाई अभी भी हम आपके साथ हैं, अभी भी same page है। And if you, अगर आपको याद हो तो ज़माने में opposition walks out and Imran Khan had the numbers. I think he got 176 votes or whatever it was, and therefore he ended up winning the vote of confidence and he stayed on. Next big event, February 11, 2022. अच्छा इस दौरान बहुत कुछ हो गया था, and everyone knew that something is happening. Now, what I want to remind you is that Maulana Fazlur Rahman came out very vocally and publicly on the 11th of February 2022, voicing his intent for a vote of no confidence कि भाई हम अब serious हैं और हम ला रहे हैं vote of no confidence. Now look at the timeline very carefully. February 11, 2022. The war, the Russia-Ukraine war doesn't start for another couple of weeks. Okay, so just shy of a couple of weeks. So this had nothing to do. Just मैं आपको बताऊँ ना, Imran Khan's version of the cipher is basically the vote of no confidence was brought because of the Russian-Ukraine war. If you read the Intercept का article जो उन्होंने जो commentary दी हुई है और उन्होंने जो cipher reproduce किया है, it seems like that US has become unhappy with Imran Khan um, post the Russian-Ukraine war and because of his trip to Russia, and then they push for a vote of no confidence, or they back the vote of no confidence. Just let me backtrack a little bit and remind you that PDM was formed in September 20th, 2020. Now, if you remember in that entire time frame, इमरान खान, बल्कि जब पीडीएम जब बनी थी तो मुझे अभी भी याद है इमरान खान ने एक बात कही थी कि यार ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त कोई बात नहीं थी कि अमेरिका किसके कहने पे ये हो रहा है और फलाना। उस ज़माने में तो इमरान खान तो अमेरिका के साथ भी बड़ा टाइट था ना, वो ट्रम्प साहब थे तो उनके साथ बड़ा याराना भी था इनका। So there was no talk of any American conspiracy back then. And like I told you, in September 2020, बिलावल भुट्टो ने already अपने intentions very clear कर दिए थे कि भाई हम vote or not no confidence से खान को हटाने वाले हैं। So there was no conspiracy. It was just a matter of all the pieces of the puzzle getting together and then pushing for the VONC. So Feb 11th को finally intent comes out कि हम जा रहे हैं, हम table करने वाले at any time. For whatever reason, Imran Khan did not take any action. I mean, उनको
उस वक्त भी था कि he could have dissolved the assembly uh, and gone into election. But I feel that he wouldn't have done that because उस ज़माने में उनका popularity graph was not that good. Next big event, March 8, 2022. The VONC is finally tabled. Okay, like I make a note here that the cipher was sent one day prior, so March 7th को हमारे foreign office को already मिल चुका था cipher. अब उस cipher, most probably no one had read it by then. I mean, maybe the PM had not seen it, or even the foreign minister wouldn't have seen it. Maybe the foreign secretary may have read it in the morning, but most likely very few people read it back then. But be that as that may, March 8 को VONC टेबल हो जाता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब खान साहब by law cannot now dissolve the assembly. Finally, the very last thing was the VONC passes and Imran Khan gets ousted. Okay, so why did I do this? इसका मकसद क्या था? मकसद इन दोनों टाइमलाइंस को दिखाने का ये था कि there is a clear disconnect between Imran Khan's version of events and what actually transpired. ठीक है? खान साहब का क्या वर्जन है? खान साहब का वर्जन ये है कि everything was hunky dory, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और एकदम से रशिया का वॉर शुरू होती है यूक्रेन के साथ, और आई डिसाइड, मतलब इमरान खान डिसाइड करते हैं और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करती है कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, और इसकी वजह से अमेरिका मुझसे नाखुश होती है और वो मुझको फिर एक धक्का देती है और लोगों को अपने साथ मिला के मुझे फारिग कर देती है. ये उनका वर्जन है, और ये उनके जितने भी फॉलोअर्स चाहने वाले हैं उसको आमन्ना व सदकना कह के उसको मान लेते हैं. लेकिन अगर आप ये असल टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखें, इट्स वेरी कंपेलिंग कि दिस वाज नॉट द रीज़न व्हाई, और शुरू से ही ये कोशिश हो रही थी कि इनको निकाला जाए. मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तरीका ट्राई किया, वो नहीं, और उनको पजीराई नहीं मिली. अगर आपको याद हो तो दोनों पीपल्स पार्टी ने और पीपल एन ने वो उनके धरने में शिरकत नहीं की थी, बस वो एक दिन के लिए आए, हाँ हेलो टाटा बाय बाय करके भाग गए. So because they didn't want to be part of any extra constitutional uh, mechanism to to bring change. Or जब PDM form हुई, like I said, the reason for their existence was to get rid of him, and they very clearly said कि हम एक constitutional तरीके से इनको निकालेंगे, और वो constitutional तरीका क्या था? Article 95 था. So 2 years before this, any of this stuff happened, um, the opposition had already started pushing for a VONC, ठीक है, for a vote of no confidence. और खान साहब ने खुद back then in 2020 वो कहते थे यार ये सब चोर डाकू इकट्ठे होकर मुझे निकालने आ गए हैं क्योंकि वो अपनी चोरी बचाना चाहते हैं. No mention of America, no mention of बैरूनी कुव्वतें, no mention of साजिश और ये फलाना ढिमकाना. वो बाद में उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि रिवर्स इंजीनियर किया, अच्छा ये तो चीज़ हो रही है, अच्छा ये साइफर भी आ गया है, इसको मैं सारा कुछ मिला के किसी बना के, वो जैसे वो कहते हैं लेट्स प्ले विद इट. He played with it. Attacking, spoon feeding was another word he used. Spoon feeding fertile minds. These are the words, or fertile mind, the way he said it. Uh, these were the words he used of how he conjured this entire, this narrative, and it's sold with his people. And like I said, कि fake news इतनी तेजी से आती है और इतने frequency से आती है कि they bombard you with it, कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक खत्म हुई है. So if you were to just take a pause and move out, take a more holistic view of what happened, like I showed to you, then it starts making a little more sense कि यार ये इतनी आसान कहानी नहीं है जितना हमारे खान साहब इसको simplistic बना रहे हैं. A lot more had happened, and if you were to follow the chain of those events, it becomes very clear that this was not at, at the at the push of the US. This was done purely as part of internal politics of Pakistan. Uh, there's a lot more that I can discuss, and I wanted to discuss, but I'm going to keep this video short. I think I'm already on 30-minute mark. But
Yeah, maybe I will talk about in a second part of the Cipher के ऊपर जो judgment आया था. I think that judgment is worth looking at. So maybe I'll discuss that judgment in detail. It's a 77-page document. So there's a lot of information in there that needs to be traversed. इसमें आप बहुत कुछ देखेंगे कि खान साहब की कैसे सबकी होती है उस hearing में. Uh, so maybe that's something for the second part. So that's all I have for you guys for from this episode. Again, thanks to everybody who has subscribed to my channel, and I would request you to subscribe. Whoever hasn't, please subscribe. Hit the bell icon to see latest content that I put out. I'll try to do this on a weekly basis, although I can't promise. Um, but yeah, that's all I have for you guys. See you again next time. All the best. Allah Hafiz.